हेलो एवरीवन एंड दिस इज द 10th एपिसोड ऑफ अनिश विद तुषार। और इस पॉडकास्ट में मैं एक्चुअली तुम्हें अपना एक न्यूज़लेटर रीड करने वाला हूँ। दिस न्यूज़लेटर हैज़ बीन हाईएस्ट परफॉर्मिंग न्यूज़लेटर ऑफ माइन एंड आई वांटेड मोर पीपल टू लर्न अबाउट दिस आइडिया एंड थिंक अबाउट दिस, especially young people. So I'm going to talk about this again, and my friend suggested that it's a good newsletter, you should talk more about it, so that's also there. एंड आई वॉन्ट पीपल टू डिसअग्री विद मी ऑन दिस आइडिया, क्योंकि मैंने एक दिन यूं ही बस सोचा था, यूं ही बस मज़े में लिख दिया था और मेरे को नहीं पता था कि लोगों को इतना पसंद आ जाएगा. So I want people to disagree with me on this idea, point out some flaws so I can make this idea better. So yeah, I'm going to read you the newsletter, and like I'm going to explain you what I wrote in the newsletter, I guess. And then you will go in the comments and you will disagree with me कि like तुषार तूने ये गड़बड़ की है. ठीक है, this is what's going to happen. So let's start. So तुम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ना, you should not get into a relationship at a young age and you should focus on your career. And I don't necessarily agree with this idea. आई थिंक जो यंग रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. देर आर सम पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस कि लाइक फर्स्ट कि लाइक योलो, यू ओनली लिव वंस, एंड ये जो यंग रिलेशनशिप्स हैं ये लाइफ में एक ही बार आने वाले, तो यू शुड एंजॉय देम रादर देन जस्ट फोकस बी फोकस्ड ऑन योर करियर. सेकेंड ये है कि सेकेंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस आइडिया इज कि लाइक your life should have multiple elements in it. Your life should not be only about one thing, like okay, your career. Your life should be about your family, your friends, your career, responsibilities, your self, self improvement, some time you give to yourself and everything. All these things should be a part of your life rather than just one thing. And most of the time, for most of the people, it's the career, and sometimes it's an addiction. यू नो रोज़ फूक रहे हैं भाई दिन में बैठ के, मतलब ज़िंदगी यही है. बट या, आई हैव दिस थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड. ठीक है, एंड आई थिंक पीपल डोंट टॉक अबाउट इट इनफ, एंड इट इज़ दैट कि इट विल ओनली बिकम हार्डर फॉर यू टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप एज यू ग्रो ओल्डर if you don't have experience. And my friend Mitesh puts it in a very good manner कि like getting into a relationship is like getting into an entry level job. you know you need job to get an experience, but you need experience to get a job. So yeah, this is how it works. But this is just a gist of what I'm going to say, so let me explain you it in a थोड़ा deeper. So मान लो कि तुम 18 साल के हो. ठीक है, तुम 18 साल के हो और तुम अब तक रिलेशनशिप में नहीं आए हो. ठीक है, एंड इट्स एक्चुअली ओके अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे आसपास के दोस्त भी रिलेशनशिप में नहीं आए, सब 18 के हैं. ठीक है, और तुम इतना बुरा लगता है लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगता, और तुम थोड़े जेलस भी हो आसपास जो लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनसे. बट फोमो और जो इनसिक्योरिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है, थोड़ी है, बट उतनी ज़्यादा नहीं. लेकिन मान लो 3 साल बीत गए, तुम 21 साल के हो गए. अब 21 साल की उम्र में भी तुम्हारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं आया अब तक. ठीक है, अब बड़ी प्रॉब्लम आती है. अब प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें तुम्हारे आसपास के सारे दोस्त या तो रिलेशनशिप में जा चुके हैं फर्स्ट अपने रिलेशनशिप में, या फिर एक्चुअली 2-3 रिलेशनशिप से निकल चुके हैं. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू. सो जो जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, और जो फोमो आता है, वो तीनों एक साथ आते हैं. You don't you even start hating some of your friends who are in a relationship. And secretly, of course, you don't want to tell them that you hate them because just because they're into a relationship. But sometimes you actually just tell them on their face कि like you hate them, and you don't like when they spend time with their partner. So yeah, that also happens. But the most difficult thing that happened with a guy or girl who is 21 and has never been into a relationship, वो रात को बैठ के सोचता है कि am I not good enough, or I won't ever get someone and I'll just die alone. Like, people actually think like that when they are single for so long and their friends are getting into a relationship. The whole FOMO, the insecurity, the jealousy mix up, and they start questioning कि like शायद मेरे में ही कुछ कमी है. And it happens a lot. So लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस सब फैक्टर्स की वजह से तुम हो जाते हो डेस्परेट. अब जैसे ही तुम डेस्परेट होंगे, तुम्हारा नेगेटिव लूप हो जाएगा चालू. तुम रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुम डेस्परेट हो. लेकिन तुम डेस्परेट क्यों हो? क्योंकि तुम रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हो. सो या, दिस नेगेटिव लूप्स बिगिन. ठीक है, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि you can't get a job because you don't have experience, but you can't have experience because you don't have a job. So yeah, it is just like, और जितना तुम डेस्परेट होते जाओगे उतने ही तुम्हारे रिलेशनशिप के चांसेस गिरते चले जाते हैं. एंड उसके चक्कर में तुम शायद एक बुरे रिलेशनशिप में चले जाओ, क्योंकि डेस्परेशन,
तुम डेस्परेशन में किसी भी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाओगे, तुम देखोगे भी नहीं कि सामने वाला बंदा अच्छा है या नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा और नुकसान होगा आगे जाके। क्या पता तुम्हें सेल्फ एस्टीम इशू हो जाए क्योंकि तुम एक गंदे पार्टनर के साथ थे, अब्यूज़ की आदत पड़ जाए, पता नहीं क्या होगा। सो या यू माइट गेट इन टू अब्यूसिव रिलेशनशिप, बट तुम सोचोगे कि मेरे को पहले कोई नहीं मिला, अभी भी आगे कोई नहीं मिलेगा, तो तुम रिलेशनशिप में पड़े हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है अगर तुम्हें 21 साल की उम्र में रिलेशनशिप नहीं मिलता, सेल्फ वर्थ थोड़ी सी गिर जाती है। क्योंकि सी, गाइज हेयर कैन डिसएग्री ऑल दे वांट कि वी शुड हैव आवर ओन सेल्फ वर्थ एंड इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द अदर जेंडर, but it is dependent on the other gender. And I'm not saying it's ideal, but that is the truth. Like, your self-esteem, at least for the guys, depends on how the other gender sees them. That's why, that's why sex, or that's why having a girlfriend is an achievement to them, because they finally think like they have achieved something. एंड आई थिंक इस ग्रुप से फिर दो तरह के लोग आते हैं, इस ग्रुप से दो तरह के लोग निकलते हैं। पहलों को बोलेंगे हम रेड पिल गाइस। रेड पिल गाइस क्यों बोलेंगे? बिकॉज दीज पीपल फॉलो एंड्रयू टेट। एंड्रयू टेट को देख के वो बोलते हैं कि अच्छा, लड़कियों को तो सिर्फ पैसे, सक्सेस और लुक्स चाहिए, तभी 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 उनकी गर्लफ्रेंड बन पाएगी जब उनके पास ये सब होगा, ठीक है। बट it's good on some levels. Some people get a whack, some people just get ki like, oh, I have so many problems in my life and I have to get better on that. For some people it's good, but for most of them it's wrong. And this is why: first, it's not a good way to see women. Like, at least in my experience until now, women are not that shallow. Like, I'm not saying ki like success doesn't help, but women are not that shallow. Like, there are other qualities that women are looking for, like sense of humor and other shit. And it's much more complicated than just money, looks and success and whatever thing, ठीक है। The second thing is कि like, even if you as a guy, like, you also want something beyond looks in a girl, like, unless you're too desperate, of course, unless you're too desperate, you just want a girl, जिंदा हो मरी हो बस, जिंदा हो मरी हो बस लड़की चाहिए किसी भी तरह, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर तुम लाइक सेंसिबली सोच रहे हो तो तुम्हें भी तो लड़की में एक दो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ चाहिए। ये तो नहीं कि मतलब सिर्फ लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए वाले मूड में तो नहीं जाओगे ना। So similar with girls, they only don't want money, look, success, and everything. They want something beyond that as well. You know. Now, second thing is कि like, अगर तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए काम करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये जो मनी, लुक और सक्सेस तुम्हें चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन, पेशेंस, गोल सेटिंग, प्लानिंग, बैलेंस, मोटिवेशन, प्रायोरिटाइजेशन और ऐसी बथेरी चीज़ें चाहिए। बतेरी मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मैं हरियाणा से हूँ तो ऐसा निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। बट या तुम्हें ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और जब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा, ये सब तो मेरे से नहीं हो रहा, तुम रुक जाओगे और उसके बाद कुछ सब रेडिट्स में जाके बोलोगे कि ओ, लड़कियाँ तो बेकार ही होती है। तुम उन्हें स्लट शेम करोगे, तुम उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करोगे, और तुम्हारा कभी एक अच्छा आउटलुक बन ही नहीं पाएगा दूसरे जेंडर के टुवर्ड्स, ठीक है। और इस वजह से तुम और ज़्यादा अनडिजायरेबल हो जाओगे। इस ऐसे लौंडों को तो लड़कियां पढ़ाएगी ही नहीं, अनटिल अनलेस दे हैव सम देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड दे वांट जस्ट टॉक्सिक गाइस। तो मे बी शायद तुम्हें कोई मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने अपने ऊपर कुछ काम वाम किया नहीं है ढंग से, तुम्हारे सोशल स्किल्स है नहीं, तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। सो दीज things happens when you get into this red pill mindset ki okay, once I have money, once I have success, once I have everything, then girls will be with me. But uh, it's not always good for you, because you really don't want to see girls as that shallow. If you're going to see girls as that shallow, it's just bad, you know now the second group of people I will call is career guys, ठीक है। ये सोच लेते कि हम पहले अपना करियर सेट करेंगे और उसके बाद लड़कियों के पास जाएंगे, ठीक है। ये लोग हैं दहेज पे डिपेंडेंट, टू बी ऑनेस्ट। बट द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कि लाइक, तुमने सब अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर लिया, तुम्हें कभी सोशल स्किल्स नहीं आएंगे, ठीक है। जो द पीपल हु हैव नॉट डेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे जस्ट डोंट नो द डेटिंग लैंग्वेज। इफ यू हैव डेटेड समवन, you know that dating language is much different from just talking to someone. There is a slow escalation, there is slowly breaking boundaries, slow flirting and everything, uh, and that's why, even if they have good careers, because they never learned the dating language, because they never dated someone and they just focused on their career, they don't have that social skills, or इसलिए they don't even have the confidence to ask someone out, basically. So these career guys lack in social skills.
नाउ दे ऑल्सो लुक डाउन ऑन पीपल कि लाइक अच्छा इसकी बंदी है तो मतलब ही इज़ अ बैड पर्सन, उसको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था एंड स्टफ लाइक दैट। आई एम लाइक ब्रो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी भाई, तू तेरी क्यों जल रही है, काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है। और कभी कभी ये होता है, देर इज वन मोर थिंग, व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप देन ओनली यू नो कि लाइक व्हाट यू वांट। ठीक है। लाइक अगर तुम रिलेशनशिप में रहे हो तो तुम्हें पता है ये बात कि लाइक जब तक तुम रिलेशनशिप में नहीं आते हो ना, तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए। once you get into a relationship, you date a few people, you realize कि okay what exactly do you want in a partner, and yeah, again ये सब नेगेटिव लूप में चला जाता है। these people does not have any experience, now they're desperate as well। और क्योंकि इन्होंने अपने करियर पे फोकस कर लिया, इनको लगता है कि लड़कियां भी ना वो करती है कि लाइक वो खुद चल कर आए, एंड आखिरी में जाके ये एक क्या बोलते हैं उसे, अरेंज मैरिज कर लेते हैं जहाँ पे इनको मोटा दहेज मिल जाता है। बट या यू नो कि लाइक दहेज इज़ नॉट अ गुड थिंग टू प्रमोट एंड एवरीथिंग, सो आई वॉन्ट गो देयर। बट या ऑल्सो समटाइम्स यू विल गेट इन टू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लाइक ऑप्शंस तो है नहीं, तो चलो भाई एक रिलेशनशिप मिल रहा है, कोई कैसा भी मिल रहा है ले लो भाई। ठीक है। And yeah, this becomes the problem for career guys. There is one caveat here, caveat bolte caveat, there is one caveat here, is that for some people it's actually not a choice just to date people, they have responsibilities, commitments, loans and whatnot, so they have to fulfill those duties first rather than date someone. But for most people reading this, I don't think that's the problem. I don't think, most people reading, sorry, listening to this don't have this problem, so I won't talk about them. Now, once you get into a relationship, a lot of these things changes. Like once you're 19, 20 and you get into one relationship, first of all you will stop seeing women as a gold digger. Okay. You understand they're complex and they're also imperfect. You won't see them as as a pedestal पे नहीं चढ़ाओगे लड़कियों को, because तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा they are just you also stop asking for external validation because you know and you won't resent your friends, who are into the relationship. थोड़ा external validation भी कम हो जाता है once you get into a relationship, because once you get into a relationship you know कि like अच्छा ठीक है, कितना ही तुम external validation ले लोगे, and it's not like your partner is always going to externally validate you as well. It's not going to happen. तुम्हारे social skills भी थोड़ा improve हो जाते हैं. You also understand what you want to what you want and what you don't from a partner, and you'll also learn how to treat women right. So everything happens when you get into a relationship. ठीक है। you will also learn that relationship won't solve any of your problem. ठीक है। it will give you some good feeling for some time, but then you will realize that your life hasn't changed in a significant way. थोड़ी है खुशी बट इतनी भी नहीं है कि मतलब और जो झगड़े होते हैं वो भी ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो इट्स जस्ट your life quality won't change a lot just by getting into the relationship. uh, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसको मैंने बोला कि उसने मेरे को बोला कि आई डोंट थिंक आई हैव गुड सेल्फ वर्थ, एंड उसको अक्नॉलेज करने के बजाय मैंने बोल दिया आई डोंट थिंक सो। एंड अगर तुम अच्छा रिलेशनशिप में रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल थिंग आई सेड, बट because of that experience now I know कि like okay I should not say such things, I should acknowledge it. And at the same time उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा करियर प्रॉब्लम्स थी, मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप ने वो नहीं सॉल्व की, मेरे को एंगर इश्यूज थे नहीं सॉल्व किए, मेरे को इनसिक्योरिटी थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, वो सब रिलेशनशिप में आने के बाद एकदम से सॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है। शी कैन ओनली लाइक द अदर पर्सन कैन ओनली हेल्प मी, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। सो and after when once I got out of that relationship, I actually felt okay being single because I understood that a relationship won't change my life in a significant way if I am not willing to change it. So yeah, to the red pill guys I would say stop making relationship an end goal of your self improvement program. Okay, it won't last, you will hate yourself and the other gender, so don't get into that. I've been there and it took me a lot of time to unlearn that, so let's not get into that. For the career guys, I know getting into a relationship is something you can't control, but at least make it a small part of your life. It's not like I have dated a lot of people, but I genuinely feel everyone should get to feel how it feels to fall in love. So maybe instead of completely dismissing it, maybe talk to more people and try to actively date a little. The important thing that I want you to get out of this is ki, like, even if you take a longer time than other people to date someone, that's fine. You should feel okay being single and not becoming insecure of your couple friends. So
so that when finally you get into a relationship, you're not getting into a relationship because of insecurity, FOMO, or desperation, you know. Yeah, that's it, I guess, and I hope you enjoyed it. So yeah, bye bye. Comment कर देना if you have some disagreement on this idea and stuff. So yeah, bye bye.